International Teacher Day is observed on. Correct answer is a B. 5 October. Gestalt is a dash word which means learning of whole. Correct answer is A. German. Elementary school teachers work under the leadership of. Correct answer is D. Headmaster. एलिमेंट्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो उस स्कूल के हेडमास्टर के अंडर काम करते हैं. What is the IQ level of above average student approximately? Correct answer is B. 110 to 119. Above average student का जो IQ level होता है वो 110 से लेकर 119 के दरमियान होता है. Pedagogy is dash activity. Correct answer is A. B. Joint. Pedagogy is a joint activities. A relatively brief statement summarizing the purpose of the school is known as. Correct answer is A. Mission statement. Approach of individual counseling is dash and dash. Correct answer is C. Formal and informal. अगर हम इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करें तो इसकी दो ही टाइप हैं, एक फॉर्मल काउंसलिंग है, एक इनफॉर्मल काउंसलिंग है. Philosophy is an intellectual or moral activity. This is said by. Philosophy एक intellectual और moral activity है, ये किसने कहा था? Correct answer is A. John Locke. Trial and error method for learning was adopted by. Correct answer is C. Thorndike. Thorndike ने ट्रायल और एरर मेथड जो है वो अडॉप्ट किया था लर्निंग के पर्पज़ के लिए. रिसर्च इज. करेक्ट आंसर इज ए. एक्टिविटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एक्टिविटी है. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इफेक्टिवनेस ऑफ ए करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय. करेक्ट आंसर इज ए. एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के ज़रिए जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस है उसको डिटरमिन किया जाता है. कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय. कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड किसने डेवलप किया था? करेक्ट आंसर इज बी. स्टुलो एंड डेविस ने. व्हाट इज द फोर्थ लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? करेक्ट आंसर इज ए. एनालिसिस. एनालिसिस इज द फोर्थ ब्लूम टैक्सोनॉमी. Dash type of educational supervision ignores potential power of the group and the individuals. Correct answer is C. Coercive. Curriculum provides guideline to. Correct answer is B. Students. Curriculum जो है वो student को एक guideline provide करते हैं. All the learning which is planned and guided by schools, whether it is carried on a groups or individuals inside or outside the school, who defined the curriculum definition? Correct answer is C. John Carey. John Carey ने इसकी definition की थी. To promote academic and democratic culture in educational institution, dash factors be considered on priority. Correct answer is D. All of above, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है. इन तमाम फैक्टर्स को जो प्रमोट किया जाता है एकेडमिक और डेमोक्रेटिक कल्चर में, एजुकेशनल कल्चर में. हु डिफाइंस 7 कैटेगरीज ऑफ प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स नॉलेज? करेक्ट आंसर इज ए. शुलमन. क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज रेज्ड बाय. करेक्ट आंसर इज ए. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस. Which view about truth is common to all pragmatists? Correct answer is B. Truth is relative to place, time and purpose. The motivation which involves to do something to obtain something else is. Correct answer is B. Extrinsic. Distance education program are grounded on. Correct answer is C. Research and theory. Truest education of child is which? Correct answer is C. Creates global attitude. In all education system, teacher is the single most important element recommended by. Correct answer is D. Commission on National Education 1959. Piloting of test mainly ensures its. Correct answer is A. Validity. Hierarchy of need was presented by. Correct answer is C. Maslow.